Hi all, let everyone join. So I'm just adding everyone here. Okay, everyone is there. So am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, okay. Just keep my video on for कमल भाई को नमस्कार. So I'm just admitting everyone. Okay, let everyone join in. Let's give them some time. Already we are seeing. Okay. कमल भाई को नमस्कार. Namaskar, sir. Namaskar. Okay, so just joining everyone. Okay. Just 3. Okay. I think Monish is facing some network issue. Okay, maybe. Namaste, sir. Namaste, Milind. Namaste, namaste. So, just adding everyone. Good evening, Kamalji. Good evening, good evening. How are you? I'm good. Good, Dinesh. Okay, I'm just adding everyone. I think people are just joining yet. Okay. People not speaking can go on mute. Yeah, good evening, Mr. Kamalji. How are you? Good evening, sir. Good evening, Kamalji. Good evening. So starting, we will, I'll already share the agenda on the group as well. I know many people have many doubts, and we will clarify all of them. Okay, we'll go one by one. Okay, but let's first go through the actual agenda, and then we will go open for discussion. Okay, so there are a few people still joining. I'm just waiting for that. Okay. I think we had given 2 minutes now. So people who are not speaking, can you go on mute, please? So that we don't get disturbance for everyone else. Okay. Okay. So still people are joining. Let me admit them. Okay. So now let be there. Okay. Still someone is joining. Okay. Let me add waiting room. Okay, so I think 75 already and still joining. Okay. Because iPad, okay. Okay, anyways, this will be also recorded. It has been recorded right now, and we will be sharing the link also on the group, and also will be uploading the same on the YouTube channel. Okay, so we'll do that as usual. Okay, so let me share the screen first. Okay, so I'm gonna share the screen, and let's see this quarter result. Okay, and then we can go ahead. एक मिनट वापस एडमिट के लिए आ रहा है. एक मिनट इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि I can mine this. Okay, this is downloading the data by the time we start. Okay, so now I can mute my video as well. Still 2 people joining. Okay. Okay, I'm just muting my video so that the bandwidth does not get tampered. Stop video. Okay. Stop video, beta. Can you speak loudly? Yeah, am I audible now to everyone? I was actually not speaking more. Okay, so now let's start. Okay, so let me also put onto the chat. Okay, here for everyone, what would be the agenda? Okay, so I'm just putting here so that we are all together on the same page. Okay, so here we go. Samarth. Okay, so this is what we will be discussing first. Okay, I know point 4 will need a lot of time, and so I've kept time for that as well.
because I know many people have many queries on this. Okay, so we will definitely discuss all of those things post we go through these points first. Okay, so first come first, let's see what is the result so far. Okay, so whatever result we Kamalji. see here, okay, that Yeah. has to Hello, be added Kamalji. another points. Kamalji, I would like to add to the agenda that what is the way forward? What should we do in the Yeah, so that forthcoming? is part of the discussion, sir. So Yeah. we will be doing that. Yes. Yeah. आगे क्या करना है? हाँ, तो आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा सर. Okay. Okay. So let's go first. People are still joining. Okay. Okay. So let's go till April. So 29th. This was the trade we took in April series. Okay. So if you go from April to June, 3 months. Okay. We are negative by 140 points in this quarter. Now 140 is the actual price that we are sharing, but now these are 6 trades. So 6 trades multiplied by 40. Okay, because 20 points buffer we are keeping with respect to our entry, right? So even that we need to add. Okay, so that becomes say another 240 points. Okay, so 140 plus 240 is 380 and 6 trades. You can say another 5,000 rupees your brokerage. Okay, so this quarter where we are seeing, mainly 2 quarters. So January to March also we were in a loss. Now even in this quarter we can say mild loss of around 400 points. Okay, if you calculate everything, okay, your expenses and everything else of that. Okay, so not much below the you can say on that way, but yes, we have not made profit this year so far. Okay, so that we need to consider, and there are few pointers which we will share in the part 2. Okay, now when we were discussing these issues related to that textbook is better or not, so these are the results for this quarter, and I've just shared that. So 140 plus 240 is around 380, and another 6,000 points or 5,000 points for 6 trades. I don't know what brokerage you may be paying. So I'm considering actually 750 rupees per lot in Motilal Oswal, which is 2 paisa. Okay, so considering that, I'm considering 5,000 points, 5,000 rupees. Okay, so 5,000 rupees is what? How many points? 100, 200 points. Okay, so 200 points another. So 380, 580 points net would be the loss in this quarter. Okay, Kamalji, what is the plus or minus from January to June? January to June also I'll show you. Yes, that also we will see. Okay, so this is where we will be doing it. Okay, so January to June, we are 19 trades in that. Okay, so January to June, we are minus 836 points. Okay, so minus 836 points is counting only the point to point and 18 trades. So 18 multiplied by 40 you need to do. Okay, so let me open that also. Okay, so 18 multiplied by 40. So this many points, another that will be added to plus 840 points that you see. Okay, so 1560 points and 18 trades का brokerage एक मिनट ये 1560 आप गिन लो एक बार. Okay, so we are considering even the brokerage at this time. Okay, so 18, so 13,500 divided by 25. I'm not considering at all right now. So another 540 points. Okay, so plus I think 1560 there, right? So net 2100 points we are in loss from January till date. Okay, now this type of behavior in market we have never seen in last 7 years. Okay, so top bottom whoever are doing, I think from multiple years, they are also on this group.
They have never seen such type of, see, quarter to quarter, we have never seen wrong. We have seen, see, back to back losses like this. Okay, so these losses we have seen. It's not, no, we have not seen back to back losses. Now I think this is what 2020. Okay, so we have seen back to back losses earlier as well. Okay, and we have some missed rally. See, this also is back to back. Okay, so this is 75,000, the worst we have seen. Okay, so back to back losses, yes, we have seen in past. Okay, but main thing is this time, like, you know, एक पॉइंट ऐसा आया था आज on the telegram channel that market moved 9,000 points and we didn't get much from that. In that 9,000 point, okay, we have not just taken, I think one trade we didn't took, which was in start of July. Okay, बाकी सब ट्रेड्स इधर है. ओके, अभी करंट ट्रेड का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको आप छोड़ दो, जुलाई वाला. ओके, बट जो फर्स्ट वीक ये वाला जो ट्रेड था, इसके पहले वाला जो बाई था, ओके, वो हम लोग ने लिया ही नहीं था. ओके, बिकॉज अगेन 300 पॉइंट्स अबाउ गैप अप हुआ था और गैप अप के बाद ऊपर में हम लोग को बाय आ रहा था. So that was the reason why we didn't took it. Okay, and second thing was, again it was coming at the same level, 44,480 was the level if I am not wrong. Okay, and that level से हम लोग को ऑलरेडी एक बार बाई करके हमारा स्टॉप लॉस लेके गया था. ओके, एंड वन वी हैड नॉट टेकन, इफ यू ऑल रिकलेक्ट, जून में भी एक ट्रेड नहीं लिया था एंड दैट सेव्ड अस 800 पॉइंट्स. एट द सेम लेवल बाई नहीं लिया था, राइट? So yes, somewhere, you know, we had seen that these levels were not giving a breakout, and that is the reason why I was reluctant to take a trade. And that also entry points is 300 point ऊपर में. Okay, and then that went against us. That is fine. Okay, अभी current trade में तो हमको entry नहीं दिया था. Okay, so again, you know, the discussion was कि we missed the rally, but did we really miss the rally? Because टॉप बॉटम के हिसाब से अगर आप एंट्री ढूंढो तो एंट्री था ही नहीं. हम लोग ने उस दिन एक तो प्री कट किया 411 पे, जो मैंने रखवा दिया था कि भाई निकल जाओ अभी, बिकॉज इट माइट टेक स्टॉप लॉस आइदर दैट डे और नेक्स्ट डे. एंड दोज हु वेटेड नेक्स्ट डे, दे ऑल नो दैट दे कट इट एट 850 रादर देन 411. सो जिन लोग ने मेरे साथ बंद कर दिया था, उनसे भी ज्यादा उन लोग ने 450 पॉइंट दे के वो बंद किया. Now assume that you would have bought on that same day. Okay, अगर हम लोग ने उस दिन बाय भी किया रहता था 850 का, तो 1% was coming to around 45,390. Okay, so यही देख लो आपके सामने है, 45,850 पे अगर बाय भी ट्रिगर होता था तो 0.99 would come to this, and that day's low was 45,360. तो आपका 1% भी चला जाता था. So 900 points you would have lost, plus जो 500-600 पॉइंट जो तुम्हारा गया ऑलरेडी, वो भी जाता था, right? So see, markets had behaved in such a way कि हमको normal entries नहीं है. Okay, so there is nothing like, you know, we are missing rally because of system not working. ऐसा नहीं है. Market has not moved in the normal fashion. अभी जो भी बात कर रहा था ना कि हम लोग को February से लेके अब तक, February में I think market was 41,000 and not 37,000. Okay, so अगर आप Feb का देखो तो 41,000 से अभी तक का जो रैली है, उसमें हमको 1000 पॉइंट, 550, 1100 और 800 ये मिला भी है. But then if the market has went sideways, we can't do anything. See, top bottom as a strategy we are trading it, and top bottom strategy will give you money whenever market moves in a single direction. Okay, so whenever you know, we get something like that, हमको 100 के ऊपर पहुंच गया क्या? Yes. Okay, so we will be you know, looking into this as well कि हम कहाँ wrong है. तो मेरा, see, question is not about I think Sanjay bhai asked what next. What next क्या 7 साल से इसने मेरे को पैसा दिया है, एंड इसी ने डबल भी करके दिया है ना. आप लोग
जो लोग पुराने हैं they can even share their experience about this system. Okay, so there is no second thought that the system needs to be totally discarded and do something else. Okay, so see, the question is, if we are doing a strategy, okay, we can't change the strategy unless 3 to 6 months goes wrong. And now 6 months we are now going to change few rules. और वो rules भी क्यों change कर रहा हूँ वो भी मैं आपको एकदम ही clearly बताऊंगा, क्योंकि वो rules अगर हम apply करते थे पहले, so February we were not aware, and I think one trade in May we were not aware that market will behave in such erratic fashion. इसके लिए अभी वो देख के we are going to get into a new rule for such market movements. Okay, so till now what I've just discussed is this quarter's thing, पूरा अब तक का साल का जनवरी से लेके अब तक का results, and one thing which I will again say here is I will never have any disbelief for this system, because I know the system will work when the market normalizes again. Okay, it's just market behavior which is going in a other direction. अभी जितना भी movement आपने देखा है उसमें हमारा buy trades भी fail हुआ है. See, we have buy trades which have failed also, and then the market has zoomed again. Okay, so it's nothing that we as a top bottom strategist can do in this case. और ये खाली मेरा है ऐसा नहीं है. Okay, so what we are now going to also see is the textbook results. Okay, because many people were thinking that buffers are creating issues. So now I also have result from one of the student who is doing textbook. Okay, I'll not name the student because I don't want him to be getting this calls from each and every one of you. Okay, so he is doing 2 lots on textbook, 3 lots on our system. Okay, and let me show his results as well. So top bottom textbook is here. Okay, so now if you look at it, this is from June 2022. Okay, if you look from June to June, okay, I think he's given me June to June entire thing. Yes, 22 June to 22 June. Just count number of trades in this, and then I will show you June to June apna trades. Okay, so this is the number of points. Okay, and let me show you, इसको वापस ऊपर लेके जाओ. Okay, इधर है count. अभी sum करना है, sum नहीं करना है. I just need the count. Okay, so if you look from here, चलो ना यहाँ से देख लो कितने trades है. Okay, 86. See, the count is 86. Okay, June to June. The result is here 7839. अभी जून में देखो, इसके मई जून में कितने ट्रेड्स है वो देखो आप. हमारे इतने सारे ट्रेड्स नहीं है. Okay, so see this again. March, entire March. अप्रैल में तो हमको भी पैसा आया है और हमको इससे ज्यादा आया है. Okay, so we are still there with them only. Okay. Sir, textbook means top and bottom. No, 1 rupee also offer in top and bottom. Who is saying this? I didn't got you. Deep Badiani, sir, what favorite student? Deep Badiani. अरे दीप पता नहीं, तुमको तो पब्लिक दुआएं दे रही है. तुमने लॉस देखा नहीं था, ये पूरा साल लॉस दिखा रहे हो तुम सबको. सर इतना भी लॉस नहीं मांग रहा था. हाँ, क्या था तुम्हारा क्वेरी, बोलो. सर ये टेक्स्ट बुक मतलब जो टॉप आए तब निकल जाना और जब बॉटम आए तब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट है कि कुछ भी हाई लो या आधा नहीं, ये परसेंट. पॉइंट टू पॉइंट लिया इन लोग ने. टेक्स्ट बुक इज टोटल टेक्स्ट बुक. ओके, मतलब 45,000 इज न्यू टॉप, तो 45,000 पे एग्जिट होके जो भी ट्रेड है उसमें रिवर्स हो ही जाना है, एग्जिट टॉप और एग्जिट बॉटम पे. दीप भाई, हाँ गणेश ईयर. हाँ गणेश जी, ऑल वेल. हमने तो बोल दिया लॉस, हमने इस साल चालू किया और हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी. नहीं अभी भाई, तो अभी ट्रेड करने के लिए पैसा भी नहीं है, ऐसा हो गया. हाँ?
कम से कम बाकी का एक एक लॉट वाले को भी सोच के देखो यार, तुम कुछ बोल देते हो और वो सच हो जा रहा है अभी। अभी इसके लिए उसको हम लोग ने चुप कर दिया गणेश जी। अभी वो कुछ भी बोलेगा ना उसको अरे निकाल अभी कुछ देंगे। बोलेंगे तो भी हमारे पास ट्रेड के लिए पैसा नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वापस पैसा डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो उसको छोड़ दो। ओके सो सी मेनली व्हाट हैज हैपेंड इज अभी ये दीप से अभी वसूल करो, जिस जिसका लॉस है उसको 10-20 दिला दो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का हम लोग ने देखा 86 ट्रेड्स जून टू जून। ओके नाउ लेट्स सी हमारा कितना था तभी। Can we, Kamalji, can we compare apples to apples, like from these 2 quarters only? We can do that also. I am just telling from June to June also, and from if you want January to January, January to June also. कमल जी इसको जनवरी टू जून कंपेयर हमारा और इनका दोनों दो बताइए। क्वार्टर, या हाँ या वो भी करूंगा सर, वो सब दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ओके सो राइट नाउ मैंने जून से जून लिया है, तो लेट्स सी जून टू जून also. Yeah, Okay, so definitely. June to June we have how many trades? Let's see that. See main thing ये लोग मर गए किसमें है? अगर आप जून टू जून देखोगे, okay, so see this 6 यार ये दो जगह पे काउंट हुआ, एक मिनट। 21 नहीं 21 से मैंने काउंट कर लिया, वो सॉरी माय बैड। ओके सो जून, मैं वही सोचूं इतना सारा ट्रेड कहां से आ गया मेरे को। ओके सो हियर सी 7300 पॉइंट्स ऑड। ओके 34 ट्रेड्स, सो दिस इज काउंटिंग जुलाई आल्सो। ओके तो मैं एक कम कर दूंगा क्योंकि ये 33 ट्रेड्स है और उसके पास वी सॉ 86 ट्रेड्स। ओके सो वही, okay okay so 7700 points, so it is similar to what we are seeing here. Okay 7837 or 7800 पकड़ो ना roughly. Okay so इसका भी 7800 है। Okay we have 7700. Now number of trades here are 86. Okay we have 33. Okay so वहां पे डिफरेंस अगर आप देख लो 53 ट्रेड्स का ज्यादा, तो 53 ट्रेड्स मल्टीप्लाइड बाय 750 अगर आप डाल दो, उतना ज्यादा खर्चा आपको लग गया। ओके प्लस ये 39,750 पकड़ लो एक, प्लस 53 ट्रेड्स मल्टीप्लाइड बाय 40 का बफर, जो 2020 का बफर हम डाल रहे हैं, तो ये 2120 पॉइंट्स हो गया। ओके तो प्लस 1500 पॉइंट्स बिकॉज 40,000 मैं पकड़ रहा हूँ। ओके तो रफली 1600 होता है, 1500 पकड़ लो, तो 3600 पॉइंट्स इसमें से माइनस करो आप। ओके so this will then come to, textbook is coming to this minus 3600. okay and this is what we are. अभी उसके बाद आप टैक्स निकालो, बाकी सब निकालो, तो इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा देख लो आपके सामने। so what we are doing with buffers, I don't think so we are doing anything wrong in that. और उसके वजह से अगर आपका एक दो ट्रेड मिस भी हो रहा है ना, see my main point was to focus on, I know many people feel that we are missing trades because of this buffer, but ये देख लो ये टेक्स्ट बुक है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। ओके एंड दिस हैज गॉट सी एवरीथिंग, आप हर एक डेट के साथ मैच कर सकते हो। और अभी किसी ने बोला ना एप्पल टू एप्पल, आई डोंट नो हु सेड दैट, लेट मी डू दैट एप्पल टू एप्पल एज वेल। ओके जनवरी से चालू करते हैं, ये देख लो। ओके सो जनवरी से आई विल जस्ट स्टार्ट, ये जून एंड तक है मेरे पास। ओके सो सी हिज रिजल्ट इज minus 2184, 47 ट्रेड्स। ओके सो एक मिनट, minus 2184, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना था, 47 राइट, 46 47 क्या था, किसी को याद है? 47 ना, हाँ। ओके अभी अपना देख लेते हैं, अपना जून जनवरी, हाँ 4 जनवरी। ओके
एक ऊपर, तो 836, 18 trades, 836, okay, so minus 836 and 18 trades, 18, right? तो अभी भी देख लो उसका लॉस, टेक्स्ट बुक का लॉस देख लो और अपना लॉस देख लो। ये तो अभी तो मैंने डिफरेंस नहीं निकाला है, 30 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, 29 ट्रेड्स। चलो ओके, एक्चुअल कंसिडर करो डिफरेंस में। सो अगेन 29 मल्टीप्लाइड बाय 40 पॉइंट्स अपना बफर, तो 1160 पॉइंट तो उधर और ऐड हो गया। ओके, प्लस क्या हम लोग ब्रोकरेज 750 मल्टीप्लाइड बाय 29। ओके, तो ये दूसरा, तो दूसरा आप 800 पॉइंट पकड़ लो। ओके, एक्चुअली 850 है बट 800 पकड़ो। ओके, सो 800 प्लस 1100, मतलब राउंड अबाउट करके 2000 पॉइंट दूसरे निकाल दो, तो दे आर इन अ लॉस ऑफ व्हाट, minus 4200 points. And what are we into loss right now? We just calculated that, right? Around I think 58,000 का net loss है हमारा। So top bottom strategy right now in this market, it is yes tough to execute right now, but with our buffers and with our rules we are still saved। Okay, but now I'm going to change few things as well। So मैं क्यों ये comparison भी लेके आया हूँ, because I know many people had that doubt, and mostly the new students who just started in January। See, I feel sorry for everyone because they just started on, you know, listening from someone that ये अच्छा strategy है, ये अच्छा चलता है, it has given good returns, and this year suddenly the market has changed its direction। Okay, the way it behaves, it has changed, and that is the reason why we have got whipsaws। Okay, but there are also few ways by which we would have turned this 836 को मैं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास ऐसे 3 ट्रेड थे जिसमें मेरे को 500, 550, 600 पॉइंट प्रॉफिट आए थे और वहां से 700 पॉइंट के लॉसेस आए। ओके, सो थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन, ओके, वी आर, अरे वो सब छोड़ दो, मेरे को नहीं, Sir, can I speak सोशल something? मीडिया पे मोनिश ये सब अपने लिए नहीं है यार, छोड़ दो उसको। सर एक क्वेश्चन मैं था। आपको सीधा Sir. एप्पल टू एप्पल कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, एंड यू नो Hello. आई एम नॉट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्सन बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, वो बच्चा जी। ना फोन खा खा के मर जाएगा, और उसने मेरे को स्वेयर दिया कि भाई तुम बताना मत कौन हूँ करके, बिकॉज ही इज डूइंग Hello. आर आल्सो और ये भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। Sir जी, can I सर speak अपना something? आप जैन से अब तक देख रहे हो ना, जैन से हाँ, जून? मैंने जैन से जून तक भी कंपेयर किया और जून टू जून भी कंपेयर किया। तो जैन टू जून आपका कितना आ रहा है? क्योंकि मेरे कोई एंट्रीज मिस नहीं हुए या फिर अलग नहीं लिया है, मेरा तो -2000 आ रहा है। हाँ, तो -2000 इज प्रॉपर नो, बिकॉज हम लोग ने एक्सपेंसेस गिना ना बेटा भूषण। नहीं, -2000 विदाउट एक्सपेंसेस नॉर्मल है। अरे एक्सपेंसेस इन सेंस यू शुड हैव कंसीडर्ड 18 ट्रेड्स मल्टीप्लाइड बाय 40 द बफर, और बाकी कभी कभी तुम्हारा 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे में एंट्री हुआ रहेगा, बिकॉज यू माइट हैव मिस्ड द एंट्री और फिर आपने ऊपर नीचे में लिया रहेगा। नहीं, वो खाली ऊपर कंपेयर नीचे तो करो। मेरा हुआ नहीं है। See, ठीक है, because बाद ये में जो देखता मैंने हूँ मैं। इधर डाला है ना, ओके, हाँ ये जो एंट्रीज है ना, ये Hello. हाँ Sir जी. पूरा व्हाट्सएप का एंट्रीज है। तो व्हाट्सएप हाँ का एंट्रीज में दूसरा, हर ट्रेड में 40 पॉइंट्स वी आर एडिंग, बिकॉज वी आर एडिंग दैट 20 पॉइंट्स बफर। बफर बोथ साइड वाला। बोथ साइड वाला बफर मैंने डाल दिया 40 पॉइंट्स, एंड 750 रुपीज पर लॉट आई एम कंसिडर। तुम तो जीरो दा कर रहे हो, तो तुम्हारा तो एक्सपेंस भी इतना नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, मैं सिर्फ मेरे जैसे आपका ये एंट्रीज है ना, मेरा भी सेम एंट्रीज है विथ बफर, यानी मतलब मेरा एंट्री। आई डोंट माइंड, मैं आज ये हाँ एक्सेल अपना मेरा वाला एक्सेल आई विल पुट इनटू द ग्रुप एज वेल, सो यू हाँ कैन कंपेयर द डेट्स एंड प्राइस एंड विद योर लेजर। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है, वो आप कर लो। सी, वी हैव हाँ नॉट मिस्ड एनी ट्रेड हियर, वी हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग हियर, इसमें हर ट्रेड है। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं देख लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर आपने जो टेक्स्ट बुक वाला दिखाया था सर, उसको ओपन कीजिए ना एक बार। ये रहा सर इसमें एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, कौन सा मंथ देखने गया वो बोलो।
सर एक ही दिन में बाय और सेल दोनों कैसे आ रहे हैं सर, वो अरे वो समझना था लोग सर। टेक्स्ट बुक पे करते हैं सर, टेक्स्ट बुक वाले का तुमको पता नहीं अभी। नहीं पर सर अगर जिस दिन बाय आता है तो हमारा रूल के हिसाब से अरे दे 1% डोंट फॉलो के एक दिन में एक ही ट्रेड आना चाहिए, और जिस अच्छा। दिन मार्केट ने वो पागलपन किया था कि ऊपर जाके नीचे भी आया था एंड हाँ। फिर वापस ऊपर गया, तो उन लोग का दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक ही दिन में देखो कितने ट्रेड्स है उसके। सर वही मैंने देखा कि देखो। 3-4 जगह पे एक ही दिन में दो ट्रेड भी दिखा था, हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। अरे अभिजीत, Am I audible? Hello. अभिजीत अभिजीत सुनो। Hello. यस सर। अरे तुम बोल रहे, कौन बोल रहा था ये? मैं निकुंज बोल रहा हूँ सर। अच्छा निकुंज, अच्छा મિતેશ ને હું સમજાવીને આ કોના રિઝલ્ટ છે તમને જોતું તો પછી એની સાથે વાત કરી લેજો. ओके ओके सर। ઓકે મેં ઓલરેડી મિતેશને સમજાવેલું છે. ઓકે हाँ नो प्रॉब्लम। यस ही नोज ये रिजल्ट किसके है और वो क्या फॉलो करता है टेक्स्ट बुक है पूरा. ओके सो आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज see I can't name someone else who is also teaching same things. Okay, अंडरस्टूड इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ. So Kamal ji, so हाँ, you mean to say कि like as per textbook rules, जो जिस दिन एंट्री लिया उस दिन 1% को कंसीडर नहीं करना है, उस दिन नहीं मतलब नहीं उस actual दिन वो लोग 1% कंसिडर करते हैं. नहीं नहीं सी अंडरस्टैंड उनका रूल कैसा है वो मैं बताता हूँ आपको. अभी समझो मैंने बाय किया, मैंने 1% रख दिया, लेकिन उस दिन मेरा बॉटम भी आजू बाजू में है, तो मेरा 1% हिट होने के बाद अगर बॉटम के नीचे भी जाता है तो उस दिन वो लोग सेल भी करते हैं. ओके ओके एंड सी लेट मी आल्सो शो यू वन मोर थिंग. चलो यार मैं आपको एक मिनट, इधर मेरे को क्या है ये क्यों नहीं भेज रहा भाई, क्या होता है इधर, क्या बोलते हैं एडवांस गेट ना, एडवांस गेट बोला तो एक इधर और ही घुस गया. एडवांस नहीं 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 एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ उन लोग का कहाँ पे फटा भी था. ओके बिकॉज आई वाज सरप्राइज जब भी मैंने ये देखा था. ओके ये जब भी छोटू छोटू था ना ये सब, उसमें मर गए थे ये लोग, ये रेंज में बहुत मरे ये लोग. फिर ये वाला रेंज इधर, क्योंकि दे फॉलो टेक्स्ट बुक, बफर ही नहीं ना सर. बाय भी होता है सेल भी होता है वही लेवल पे, 100-150 पॉइंट के डिफरेंस में. आपने एक्चुअली नोट नहीं किया, ये देखो कितना छोटा छोटा उनका लॉसेस है, ये देखो. सी दिस. So when you're seeing the same day, see buy करके stop loss hit हुआ, बाद में उसी दिन वापस buy किया उन लोग ने. See this. Okay, so textbook is little different. They keep trading. जो उन लोग ने, जो मेरे में भी अगर आप लोग ने ध्यान दिया रहेगा पावर पॉइंट में एक पॉइंट था, always stay in the market. They literally do that. Okay, and that is the reason why आप देख लो ना ट्रेड्स कितने सारे हैं, ट्रेड्स के काउंट में हम उनको मात दे रहे हैं. Getting it? यस सर। Right? So can we move ahead now? ये कंपैरिजन बंद करके मैं अभी चेंजेस पे जाऊं, जो रूल्स का मेरे को बात करना है, because that will need some time for everyone to get awareness of that rule, and we will be doing it on the channel. सर एक बात बोलनी थी. हाँ बोलो बोलो. अरे टॉप बॉटम करना ही नहीं चाहिए बैंक निफ्टी. वो जाने दो. I know someone who is promoting top bottom in and out. अभी बीच में उसने ये स्टेटमेंट डाल दिया था, ओके, कि बैंक निफ्टी में मत करो स्टॉक्स में करो करके. ओके स्टॉक्स उसने जिसको बोला वो था DLF and all. So I don't know. Ziad Khan is there on the call. I saw him joining. I don't know whether he's there or not. Ziad, are you there? You know whom I'm talking about. We don't need to name that person, but if Zian is there, he knows it. Okay, and वो बेचारा स्टॉक्स पे करके मर गया था with the losses. Okay, so चलो इसको जाने दो. Let's go to the rule changes. Okay, so now coming back to our results. Okay, अभी किसी को भी ये याद रहेगा, अच्छा not allowed to unmute. अरे you can बाबा. I have not stopped anyone.
हाँ ये देखो इसका अमोल अदिति is saying minus 1700. So that is what I'm saying. That is the total loss from Jan to June. Yes. So वही है ना, वो अगर points के साथ और expenses मिलाओगे तो total खर्चा और सब निकालोगे तो उतना जाएगा वो. Okay. So the rules changes. Okay. Now February we had 2 trades. Okay. ये वाला मेरे को बहुत दिल पे लगा था. Okay, because it hit a stop loss. Okay, yeah, after it was giving us almost 500 to 600 points in the money. Okay, and there was host not allowed to unmute showing. अरे ऐसा नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं रोका है यार. Sorry, but I have not done anything to the console. मैंने सबको mute ये कुछ किया नहीं है. See, people are able to unmute themselves. So I've not done anything wrong here. I don't know. Zian, तुम तो एकदम नीचे भी रहोगे यार. Hey, wait, let me try to unmute it because I was asked to unmute. I think because the bandwidth is gone, we are 100 users already on this. वो एक issue रहेगा. Okay. So see, main thing is February we had 2 trades जहाँ पे हमको एक बार 600 पॉइंट का प्रॉफिट आया था. एंड वहां से वो बाई ट्रेड अपना नीचे चला गया एंड इट हिट द स्टॉप लॉस. एंड सेकेंड वाज इन द सेल ट्रेड. ओके, ये वाला भी अगर आपको याद रहेगा, ये 41,950 पे बाय हुआ था, वो 42,600 तक आया था. ओके, सो इफ आई हैव टू गो टू February एंड आई हैव टू गो टू चार्ट्स. ओके, लेट मी गो टू कैंडल्स ओनली, क्योंकि कैंडल्स ही आपको बताएगा वो डिस्कशन हो रहा है. ओके, सो February में ये देखो, ये ऑलमोस्ट इट हैड टर्न 41 सी 40 अभी रात में 4236 तक आया था ये. का पार्टनर हमारे कंपनी में. हाँ वही कमी का. हाँ ये देखो 42,500 42,500 का 42,250 का कुछ तो हाई मार के इट इज गॉन. तो दिस February ट्रेड एंड वन इन मई में 3 ट्रेड है. 3 में से एक ट्रेड में अपने को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, 500 पॉइंट्स और मोर देन 1% इन द मनी. एंड देन इट वेंट टू लॉस. आई थिंक उसमें अपने को ज्यादा लॉस नहीं आया था. But then to this, I think if I'm not wrong, this was the trade, 450 point wala. So the change that we are making, okay, is now onwards, if we are going to be say at least 1% in the money, हमने entry ली, buy की या sell की जो भी ली, और वो area से, okay, you have been signed out because you are currently you signed in on another device. भाई कौन है ये? Cancel मारो उसको. Someone else is using my Zoom. Right? Aja, you guys are there, right? क्योंकि मेरे को Zoom ने अभी बोलता है कि I am being thrown out. No, you are there. Yes. Okay. So the thing is, whenever we will be more than 1% in the money, okay, we will do 2 things. Okay, ये मैं बाद में पूरा top bottom के group पे भी डाल दूंगा. Okay, one is we might change the stop loss to entry level stop loss so that we are protecting the capital. Okay, so then we don't if it goes down also let it go down, we cut it out and अगर वो वापस घूमा तो हमको system based वापस entry मिल जाएगी. Okay, so that is one point. Second is सर एक बार और रिपीट करेंगे ये आपने जो बोला. हाँ. So जैसे ही 1% के ऊपर प्रॉफिट है, so 1% सर 1% मतलब अगर हमने 40,000 पे बाय किया, इफ इट गोज टू 4400 के ऊपर गया, ओके, तो मैं एंट्री लेवल का स्टॉप लॉस रख दूंगा 40,000. यस. Okay, so this is one thing. Now second thing is, if I see that there is a chance है कि अभी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, then we might book profits also. So we might book early profits, lesser profits, but better not to go into red or zero profit. Okay? मतलब सर कैपिटल नहीं जाएगा अपना.
कैपिटल भी नहीं जाएगा और प्लस तुम प्रॉफिट बुक कर दोगे। फिर अगर वहां से रैली उल्टा चल गया, मतलब अपने फेवर में चल गया, तो वी माइट मिस द रैली, बट आई एम ओके टू मिस सच रैलीज बिकॉज इन करंट मार्केट आई डोंट फील इट विल गो इन दैट वे। क्योंकि अगर जाना ही है, अभी अपना अभी का शॉर्ट ट्रेड समझ लो, जो लास्ट ट्रेड अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5 दिन लगातार लाल कैंडल्स, लेकिन फिर भी वो लाल कैंडल्स अपने पाव के नीचे आजू बाजू में घूम रहा था, एंड देन दैट zoomed के, दैट इज द रीजन व्हाई मैं तुरंत वो ट्रेड बंद किया। इनफैक्ट बाय द टाइम आई वाज टाइपिंग द ऑप्शन इट वाज 45,200, बाय द टाइम यू सॉ द मैसेज एंड आई सेंट इट 45,300 हो गया, और आप लोग समझो मैसेज को कुछ करो तब तक तो 380 आ गया, एंड देन आई सेड भाई जाने दो, 411 रख दो, छोड़ दो उसको। So that is the main reason why otherwise we would have not lost even 400 points जो हम लोग का गया। हम लोग 45,200 के आसपास में ही we had thought to get out because the market was crossing 60 and it was मैंने daily chart पे 60 cross over देखा, that is the reason why I shut it down। But पूरा Can you put this rule in हाँ exact words so that we can note it down? I will share everything on top bottom यार, सर इसका खाली मतलब समझ लो। सर Okay, इसका okay, इसका okay. मतलब लॉस अगर होता है तो सिर्फ जो एक्सपेंसेस है वही लॉस रहेगा, उसके अलावा कोई लॉस नहीं रहेगा। हाँ, और मेरा तो ये है कि मैं एक्सपेंसेस का लिए भी 40 रुपया में बफर रखूंगा। तो ये तो सर ये तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है ये तो। So this we are implementing because of current market, okay, and if VIX goes beyond 14 we might again remove that, क्योंकि अभी का क्या है, VIX अगर 10 और 14 के बीच में है ना, उसका मतलब है no choppiness in the market। अरे राहुल जी, Yes, sir. राहुल जी कोई तो म्यूट। बात कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो मेरे को पूछ रहा है या अपने आप बात कर रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ पूछो पूछो, क्या था? मैं ये पूछ रहा था, एक्चुअली आई मिस्ड योर दिस स्टार्टिंग पार्ट। तो ये दीज रूल्स आर फॉर मतलब फॉर वन Going डे ahead. और लाइक Sir, going ahead, we are implementing this rule. नो दिस रूल इज फॉर दिस थिंग के जैसे आज ट्रेड आया तो आज के लिए ही है या कल भी नहीं परसों भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो हमारा ट्रेड आया, ठीक है, हमारा ओपन ट्रेड है, 25,000 30,000 अपना अगर ओपन ट्रेड है और उसमें अगर मेरे को 1% से ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, आई डोंट नो, जब भी मिलेगा, ओके, देन आई विल चेंज द स्टॉप लॉस फ्रॉम सिस्टम स्टॉप लॉस टू एंट्री लेवल स्टॉप लॉस। गेटिंग इट? ओके, तो मैं आगे बढ़ तो कर। हाँ, मतलब 450 पॉइंट का बफर हो गया ना हमारा एंट्री में। सी मेनली अगर जो पुराने लोग हैं, राहुल यू आर देयर एंड इवन जो भी भूषण एंड आई वर टॉकिंग, सो यू ऑल नो कि बहुत रेयर ऐसा देखा है हम लोग ने कि हम लोग 400-500 पॉइंट प्रॉफिट में और वहां से 1000 ना मिले और मार्केट रिवर्स करके स्टॉप लॉस ले जाए। ये सब ये देख रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस चेंज, because we have never seen this in past के एक बार मैं 500 पॉइंट इन द मनी हूँ, वहां से मैं रिवर्स जाके नहीं देखा, बट दिस टाइम फॉलो अप नहीं आ रहा है। सर सॉरी, हमारे ये रूल्स है। यस सर, ये इस साल नहीं, इस क्वार्टर में 2 या 3 बार हो गया, हम 500-600 पॉइंट प्लस गए और 600-700 पॉइंट माइनस दिया। हाँ, तो इसके लिए वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस। सर अगर ये 40,000 से 44 गया या 43 गया तो फिर हम स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे? 40,000 से आपने जैसा 1% पे गया तो स्टॉप लॉस हम 40,000 का लगाएंगे, ऐसा बोला आपने। हाँ, लेकिन अगर 40,300 ही गया है तो 1% नहीं हुआ है, तब तक सिस्टम स्टॉप लॉस ही रहेगा। बट सर उसमें फिर कैपिटल लॉस भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सी नॉर्मली वो इतना भी नहीं रहेगा कि अगर 300-400 पॉइंट्स, मतलब 1% तो नॉर्मली मिल जाना चाहिए, उतना रिस्क तो फिर हमको लेना ही है। One point, sir. For example, thing is what we did. Okay, so there are 2 rules we are going to do it. Okay, one is जो मैंने बोला कि
1% है तो एंट्री लेवल रखेंगे, और दूसरा है कि अगर मेरे को की रिवर्सल कुछ दिखा उधर, ओके, देन वी माइट book the profit and get out of that trade. Sir, one question, sir. Yes, Girish, tell me. For example, our entry is 40,000 and we kept a stop loss of 39,600, 1%. Someday it goes to 40,400, okay? Then we'll move our stop loss to 40,000. Yes. But someday it goes and touches our stop loss and again goes back to the 41,300 level. Will we wait for one more signal, or we will re-enter on the same day or next day? No. Then we will wait next day. See, once stop loss hit, okay, then we will wait for next day for new system-based entry. See, that scenarios will be very rare. Okay, it goes and again comes back. Okay, so that would be only if there is some key results or key session on banking. Okay, so during those days, anyways, if you have seen, we didn't trade it only on budget day. Yes, sir. Many times we have also seen it as about to touch our stop loss by 10-15 points, but bachke, again we have got the 1,000 points rally also. So if that is the case, we will not be able to get the trade. So see, that is that, you know, my reluctance to change this rule was because 3 to 4 trades in last 1 year we have seen that, you know, we were saved from our stop loss, system stop loss minus the buffer, okay, by 10 points, 7 points, and then we got 1,000 points. Okay, but if you compare those number of trades, Girish, those are just 3 trades like that. But throughout the year, we saw that around 6 to 7 trades, we were getting more than 1%, and from there we lost more money. So we are able to, you know, come to that conclusion. So all of these things has been, you know, working behind. Okay, so we have seen almost 2 years backlogs. From there, we understood that, you know, if we implement this, should be okay for us. Okay, so what you are saying, if we lose even that, you know, profit from, you know, almost touching the stop loss and again bouncing and giving us the profit from those 3 trades, one trade was such which would have given us another entry also, and then again given us 1,000 points. So mainly, you know, 2,000 points profit that we would have got by not changing this rule, but we would have saved 7 stop losses, which is, you know, almost 7 multiplied by average of 400 points, so 2,800 that point, and another 500, you know, minimum profit that we would have got on those 7 trades, so 3,000 points another. So we are saving 6,000 points by this new rule, and we don't change the rule, we are just getting 2,000. So that is the comparison which we did before coming out with the rules. Okay, sir. Okay. And basically, that is what one thing which I would make everyone sure is, see, people are trading with 1 lot, 2 lot, 10 lots, 20 lots. I don't know. From my place, okay, I've you know, shared the results also ahead that I am, you know, trading currently also at this level. 540 lots are being traded. So I cannot sit quietly when this market is doing this to us. And that is the reason why this entire, almost from April, I have been, you know, behind how to change few rules. Okay, so that you know, we are implementing now. Okay. And one more point, sir. This RSI last few times it has given us some wrong signals direction. Yeah. So, yeah, so what's the plan for that? So basically, it's see, the way market has moved, okay, is as I say, not synced with the charts. Okay, when the movements are happening, and then they adjust to the chart later on. Okay, so one trade which we missed also. Okay, I can show you that also here. Okay, and since I'm just showing you this, before you know, since we are discussing the rules, there is one more rule which I would like to share is, we will be, because the volatility has decreased, okay, the gap up are not that higher, okay, or the gap downs are not much higher. What we are going to also change is, you know, the buffer that we are keeping 1%. Okay, we are going to reduce that to 0.5% for now. Okay, so now this is the trade
which we missed actually. But the buffer is always 0.5% with us, no? नहीं 0.5 नहीं, हम लोग 1% भी रखते थे ना. अच्छा. Okay. See, 1% is when there is a lesser difference between buy and sell, or entry and closing price. So if it was less than 40 points, 50 points, and if we are considering that as a top or a bottom, we were adding +1. Okay, so that we are going to reduce now. Now see this. This is where वो जो पहले वाला ट्रेड जो हम लोग ने मिस किया. Okay, एक मिनट, पेंसिल किधर गया मेरा? See, it has resisted here, it has resisted here, and that day also it resisted 60 resistance, upper band resistance. अभी यहाँ पे अगर मैं बाय करवाता था, ऑलरेडी अपना जो शॉर्ट ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस लिया था इसने. Okay, and then this is the range in which it was been moving for almost 2 months. See this. Okay, अगर आपको दिख रहा है, I don't know whether you are able to see this or not. Yes, See, yes. from April till June. Okay, ये एक ही रेंज में था बैंक निफ्टी. Okay, and then if this happened, okay, this was something which no one would have thought that ये करेगा मार्केट. Okay, again technically ये buy trade would have been another disaster for us. That is the reason why we didn't took buy trade. And second thing was, it was coming 300 points higher than what we should have actually bought it at. Okay, so 300 पॉइंट ऊपर में बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस 300 पॉइंट से बढ़ जाता है. अभी इतना हम लोग को ऑलरेडी ये साल में लॉस आया था, उसमें कहां और ज्यादा 300 पॉइंट का मैं रिस्क लेता. सो सी, एक बार भाग गया, बाद में सब लोग डिस्कस कर सकते हैं. वी आर Correct. Yeah. Right. I agree with that. So Yeah. people can speak on that. I have no worries. See, my disbelief will never come for this system, because I have been trading this in 7 years and I have never seen. This is the first year we are seeing so much, sideways and choppy market. And आज भी अगर हम एंट्री लेते थे ना, आज हमारा एंट्री अगर आता था ना, तो 45,960 पे आता था, which is 1% of this close. 520 का जो 504 का जो क्लोज है. ओके, अगर मैं टॉप बॉटम का ही चार्ट खोलूं एक मिनट. 484. Yeah. राइट, 484 तो बॉटम है, 504 उसका हाई है, क्लोज है उसके प्रीवियस डे का. Correct. ओके, सो देखो ये वाला. ओके, ये आपका अगर आप टॉप कंसीडर करते हो तो 505 है. 505 का 1% ऐड करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से आप सीधा बाय नहीं कर सकते हो. आप 0.5% लगाओ या 1% लगाना ही पड़ेगा आपको. तो आप 1% पे बाय करो तो 45,960. Where are we buying? राइट, तो इसके लिए भी अवॉइडेड ओनली कि हमको लेना ही नहीं है. सर वो 505 पे 0.5% लगा के भी एंट्री ले सकते थे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं, अगर बड़ा गैप अप होता था तो वापस उसमें भी हमको मारामारी होता था. नहीं 505 पे 1% की जगह 0.5%. सर हम जब 411 पे निकले तभी सर क्यों नहीं री एंटर हुआ? अरे दीप, ये देखो, ये तो खाली ये 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है. ये 20 पॉइंट में मैं कहाँ उसको अरे नहीं सर, सर उससे पहले जब हम 411 पे निकले ना सर, तब का कह रहा हूँ सर. अरे नेक्स्ट डे भी सर 411 हमने तो अपना एक्चुअल था ही नहीं. अपना एक्चुअल एंट्री वो 638. तो सर नेक्स्ट डे मार्केट अपनों को 638 में भी चांस दिए ना. मार्केट उस दिन अरे 350 तक उस चला दिन गया था. एक मिनट, उस दिन मार्केट ने क्या किया वो देखा क्या तुमने? हाँ See सर, that फर्स्ट also. गैप अप हुआ और वापस नीचे आ गया सर. हाँ, नीचे कहाँ आ गया वो? 350 तक आया था वापस सर. टेंशन आ जाता था, क्योंकि उस दिन देखो क्या किया मार्केट ने. सो इफ यू सी दिस, 925 खुला, 850 पे खुला. सब लोग का, जिन लोग बाकी था उन लोग ने 800 और 850 के बीच में बंद किया. ओके, एंड देन इट जस्ट केम डाउन टिल 360. सी 356 का लो है उस दिन, और वो लो होने के बाद वो वापस 638 नहीं आया था. फिर वो वापस वो 600 तक जाके अटक रहा था. इसके लिए फिर 638 पे उस दिन भी बाई नहीं था ना. अदरवाइज वी वुड हैव सेड कि वी कैन बाय दैट. सो दिस मार्केट ओनली डिडंट गिव अस एन एंट्री. अगर मार्केट एंट्री देता तो हमको लेने में कोई हर्ज नहीं था. सर वो 505 का समझाइए ना प्लीज. 0.5% सगळं चालू आहे ना, ऑन दिसतंय ना? सी है ना? 504 505 पडलेलं काहीच नाही ना?
दिस इज योर टॉप बिकॉज उसके बाद ये नीचे आया। ओके तो ये तुम्हारा टॉप बन गया 505। तो ये 505 और ये 484 तो खाली 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 20 पॉइंट्स के डिफरेंस में तुमको 1% ही बफर लगाना पड़ेगा ना। नहीं सर, 0.5%, 505 के ऊपर 0.5% पे एंट्री, which is 505 का 732. 0.5% भी ले लो चलो 732. 732। हाँ नाही त्यांचं चालू आहे ओके तो तुमका ये आज के दिन entry चारही नहीं करना, ठिकाणी कल के दिन बघतोय. नहीं। और वापस फिर कल का जो क्लोज है ओके वो तुमको क्या करता था मालूम नहीं। तो ऐसे भी तुम्हारा टॉप क्रॉस हो जाता 484 is मिलता था। 484 is closing, sir. Yesterday's closing. मतलब day सर before किसी का yesterday. आवाज आ रहा है पीछे बैकग्राउंड। हाँ but that is fine. So people not speaking can go on mute. Sir, Okay. one more question I have. Should I ask just now or at last? हाँ अच्छा Chat people who are open not है speaking इसलिए. can go on mute please. The one who has iPhone as a name for his phone. हाँ रुको मैं म्यूट कर देता हूँ मेरे को मिलेगा क्या। बंद करूंगे। हाँ ठीक है हो गया म्यूट चलो। सर एक डाउट है, मैं अभी पूछूं कि लास्ट में पूछूं क्योंकि चार्ट ओपन है तो। नहीं पूछ लो अभी। सर एक मुझे डाउट है, मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल 45,000 पे क्लोजिंग हुआ और एज पर हमारा बफर जो भी आधा % 1% रखे वो 45,300 आया फॉर एग्जांपल। हाँ तो सर मान लो कि तभी मार्केट 45,000 का टॉप है तो 45,100 पे क्लोज आया तो हम क्यों सर नो टॉप कर देते हैं, वो 300 वाला क्यों हम नेक्स्ट डे कंसिडर नहीं करते, वो क्रॉस तो होगा ही सर, तो अरे वो एक थोड़ा। हाँ क्योंकि टॉप एक बार चला गया उसके बाद कैसे कंसिडर करेंगे। सर मतलब टॉप तो सर हमने बफर रखा है इसलिए कि हम सेव करें, तो अगर बफर जब वो भी क्लोज 20 करें तब नहीं जब नहीं भी हम। हाँ सर 20-30 पॉइंट रहेगा ना दीप 20-30 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा तो हम लोग एक बार अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन समझो तुम्हारा एंट्री या तुम्हारा टॉप 45,200 है और अभी नेक्स्ट डे उस दिन तुम्हारा बफर की वजह से एंट्री नहीं आया और 45,350 पे क्लोज हुआ तो 150 पॉइंट ऊपर में फिर तुम कहाँ बाय करोगे। ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो 45,300 एज पर बफर हमारा बन रहा है और 45,000 का टॉप है और क्लोजिंग 45,100 है और नेक्स्ट डे ओपन भी तभी हुआ तो हम नो बाई बफर हम इसीलिए रखते हैं ना सर क्योंकि हमें विप्सोज ना आए। तो फिर ऐसा सर रूल्स कि भाई सेम डे ट्रैवल होना चाहिए, वो लॉजिक में नहीं समझा। बफर हम किस में रखते हैं सिस्टम एंट्री पे लेकिन जी सिस्टम सर, एंट्री क्रॉस हो गया तो फिर कहाँ का बफर रहेगा वो। क्योंकि सर ये 1% का बफर हमने रखा था सर कुछ अप्रैल मई में महीने में था, सभी सर 10 पॉइंट से हमने वो हमारा एक ट्रेड मिस हो गया था 1000 पॉइंट का, मई था शायद मई मंथ। मई में हाँ सर, एंड यू ऑल्सो टोल्ड दैट मार्केट स्टार्ट्स विथ माँ, सो डोंट वरी हमारा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ मई हाँ महीने ही था अच्छा शायद, वो हाँ वो वो अरे 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट ही था सर। एक मिनट हम्म। अरे दीप सो हाँ सर। यू डिडंट लिसन टू द सेकंड रूल। मैंने क्या बोला कि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स फॉर दैट रीजन ओनली वो हमारा 1% का डिफरेंस था इसके लिए हमको वो एंट्री उस दिन नहीं आई थी। बट इफ वी वुड हैव केप्ट 0.5% वी वुड हैव गॉट एन एंट्री। इसके लिए दैट रूल इज वी आर चेंजिंग नाउ टू ओनली 0.5% डिफरेंस। ओके परफेक्ट सर। तो सर अभी मान लो कि 45,000 हमारा टॉप है और 44,900 हमारा क्लोजिंग है तो हमें 0.5% तो टॉप पे ऐड कर 0.5% देना है ना लगाएंगे सर। और मान लो 0.5% सर वो लगाना ही है। 44,800 है जो तो टॉप है सिस्टम का, वो टॉप ही रहेगा ना सर। हाँ 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 मतलब सर या 0.5% लगाना है या कुछ नहीं लगाना है। हाँ या तो हाफ या तो कुछ नहीं लगेगा दैट इज व्हाट दैट। अभी हम लोग 1% या 0.5% लगा रहे थे या कुछ नहीं लगा रहे थे। नाउ ओके दैट 1% विल गो अवे बिकॉज ओके 1% अभी का मार्केट में नहीं चल रहा क्योंकि इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा। अगर आपने लास्ट ओके ईयर देखा था तो 500-600 पॉइंट का भी गैप अप गैप डाउन देखा था हम लोग ने। या ये डेफिनेटली मैक्सिमम सर। 200 250 300 पॉइंट हो रहे हैं। 300 भी अभी अभी हुआ है बाकी तो 300 पॉइंट का भी गैप अप नहीं हुआ था। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की दिन ही मेरे ख्याल से 300 पॉइंट का गैप अप था बाकी तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसा ही आता है। सर ये सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ सॉरी आप कर लीजिए आप।
ओके, थैंक यू। कमल सर, एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे हम लोग बफर चेंज कर रहे हैं एंड जो भी आपने अभी 2 पॉइंट डिस्कस किया एंड प्रॉफिट बुकिंग और कट लॉस, एक चीज मैंने और सिनेरियो देखा है कि जब कोई बिग इवेंट्स होते हैं, टेक एन एग्जांपल की सीपीआई डेटा रिलीज हो रहा है या किसी का रिजल्ट आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली सिंस अप्रैल मंथ मैंने थोड़ा देखा था कि ऑलवेज हम लोग गलत डायरेक्शन में ही बैठे रह गए। मतलब जब इस तरह का बिग इवेंट होते हैं भी, इवन ऑलमोस्ट नॉट एवरीवन बट एटलीस्ट बहुत लोगों को लगता था कि हम लोग गलत डायरेक्शन में, बट ऑफ कोर्स वी वर फॉलोइंग द रूल्स। सो उस सिनेरियोस के लिए कुछ आपने सोचा है क्या आगे, कि अगर कोई इस तरह का बिग इवेंट है तो वी माइट क्लोज द ट्रेड अर्लियर, और हम लोग जैसी मार्केट ओपन हुआ एंड वी आर सीइंग दैट डेटा इज प्राइसिंग डेटा को देख के क्लोज कर दो, समथिंग लाइक दैट? या Now you see, if there is a bigger event, okay, which will actually bring a storm in the market, we are closing the position prior to that. Okay, that we are already doing it. Okay, but now what you are saying about is कि अगर मैं opposite direction में हूँ और that event है, तो event itself is, you know, we don't know which side that event will take. नहीं सर, उस डे नहीं, मैं सेम डे का बात नहीं कर रहा हूँ। टेक एग्जांपल में अभी बाय में बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है, और सीपीआई का डेटा रिलीज हुआ नाइट पे और अच्छा नहीं रहा, एंड देन अर्ली मॉर्निंग ऑफ कोर्स वी कांट डू, हम लोग का कुछ गैप डाउन हुआ 200-300 पॉइंट्स। सो जो डेटा बनता है, एक मिनट, सीपीआई डेटा अगर तुमको मालूम रहेगा तो एवरी 15 दिन आता है, तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। सो लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन कि मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग जिस तरह का प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, मुझको ऐसा दिख रहा है कि नहीं अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। सो उस केस में हम लोग क्या अपना डिसीजन चेंज करेंगे या फिर हम लोग वी विल अगर हम कंटिन्यू? लोग ऐसे सब इवेंट्स को कंसिडर करते बैठेंगे ना, सी बिकॉज दिस ईयर दिस all things are mattering a lot because we are fighting with inflation across the globe. We had all this data coming every year, but they were not being considered at all because they were like no events. We have made these events nowadays because of the global economic crisis. Okay, and with economic crisis, markets are soaring. That is another story. Sir, to add to this point which is raised, अगर हम कैपिटल प्रोटेक्शन के सर अगर हम ये जो कैपिटल प्रोटेक्शन की अगर इफ वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस, तो आई थिंक ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। Yeah, so that is, see, अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सो मेनी पीपल कि हमारा ट्रेड जब भी ट्रिगर होता है उसके बाद वो थोड़ा प्रॉफिट जाता है और फिर वहां से रिवर्स हो जाता है। नहीं सर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम भी हुआ तो भी इट्स ओके, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। हाँ, सो सी दैट विल नॉट बी पॉसिबल अगर हमारा एंट्री के बाद पूरा घूम गया मार्केट, उसी दिन घूम गया या उसके बाद के दिन से घूम गया। बट इफ इट इज गोइंग इन आवर फेवर, then we will be able to stop totally that capital erosion. सर कैन वी ऐड वन मोर पॉइंट? हाँ, कि जब भी हमने एंट्री किया सर, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि जब भी हमने सर जिस पॉइंट पे भी एंट्री किया उस पॉइंट पे मिनिमम ऐसा रख दे कि 1% आए तो विल कट और 1.5% विल कट। वो भी सर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर जैसे आप कहे कि 1% हमने 1% इसलिए रखा ना सर क्योंकि मार्केट 1% चले तो इट वुड बी अलग जोन में ही चला जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने सिस्टम से 1% ही लॉस हमें मैक्सिमम लेना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर? क्योंकि ऐसा भी सर बहुत कम होता है। जैसा मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ और बैक टेस्टेड डेटा किया है सर, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और मैंने क्लोज लाइन चार्ट पे भी देखा है और कैंडल पे भी देखा है, तो मैं हाई लो भी कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि जब भी सर हमारे फेवर के ऑपोजिट 1% चलते हैं ना, तभी ऐसा बहुत कम होता है कि वो हमारी फेवर में आए हैं। You can do also check, sir. maximum loss we are fixing at 1%. हाँ सर, मैक्सिमम फ्रॉम एंट्री पॉइंट सर, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस। मैं चेक करके बोल रहा हूँ, फ्रॉम मैंने 2010 से लिया है सर। इवन कैंडल पे भी लिया और क्लोज लाइन चार्ट पे भी, ऐसा नहीं कि और वर्टेक्स लाइन पे दिया है। तो डे बाय डे ओपन हाई लो, जिस दिन हाई लो आया मैं ऐसा नहीं कंसीडर करता कि 915 पे आया तो हम 15% से भी बच जाएंगे, तभी का मैं लॉस बुक करके रिवर्स में ही चला जाता हूँ। तो डेफिनेटली सर रिजल्ट्स में डेफिनेटली चेंज आएंगे सर।
दिस इज माय पॉइंट सर। एक्चुअली सर मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है। ये दिस आल्सो वी कैन थिंक। यस हेलो सर लालमोहन। हाँ क्या बोला सर? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे फेवर में नहीं है, जैसे इस बार ही हुआ है, अभी जो नया जो बॉटम बना था उसमें जैसे आप टेक्निकल फंड अगर इसमें से देखें तो जैसे लास्ट एंगल फिंग बना था, CIP भी था और हैमर भी बना था, तो उस टाइम अपन कंसीडर कर सकते थे कि इसको थोड़ा मतलब कट के बुलिश ट्रेड में जा सकते थे, ऐसा हो सकता है सर? क्लोज लाइन में तो मिलता नहीं है, क्लोज लाइन में तो चेंज दिखता नहीं है, लेकिन सिंपल इज अगर मैं फिर कैंडल स्टिक्स और बाकी सब देख के अगर बाई सेल बोलूंगा तो टॉप बॉटम नहीं होएगा। जी सर, वो नहीं मान रहा हूँ सर, मान रहा हूँ, लेकिन सो वो फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, एंड करंट मार्केट इज गोइंग ऑन द स्विंग साइड ओनली। ओके, अगर आप देखोगे ना तो इट इज डूइंग दैट ओनली। अभी दिस वाज वेरी मच एकदम सरप्राइजिंग कि 60 भी तोड़ दिया था। ये देखो 60 के नीचे घूम रहा था वो। जी जी जी। ओके, उसके बाद भी ऊपर खींच के लेके गए वो लोग। सो दिस वाज वेरी रेयर सीन्स कि जहां पे मार्केट ने पूरा गिव अप कर दिया था। ये देखो देयर वाज 4 बार बेरिश डाइवर्जेंस आल्सो हियर, बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म किया, उसके बाद ऊपर उल्टा लेके गया। सो there are few things where markets are going beyond charts nowadays. Sir, at 40,400, you told to protect the profit. So that won't be the reverse point, na? If market turns negative again. Reverse story, Baba. Reverse. It's only the okay. So only the original quantity. Booking of profits, Baba. Correct. Okay. It is not top or bottom, no, where you go. Right. So that is what you have to see. Okay. सर अभी का ओवरऑल मार्केट बुलिश है सर, जो भी रीजन हो बुलिश है सर। डेफिनेटली सर ग्लोबल इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी शायद कर रहा होगा, नहीं आई डोंट नो, आई डोंट ट्रैक इट। Fundamentally, the no one is supporting, but it is हाँ सर। bullish. And see the reason which I have also seen is only one. अगर हर कंट्री को खुद को bankruptcy से बचाना है, okay, so the only way to print money is stock market now, and that is the reason why they are pumping money into markets. बाकी ये पैसा और किधर से नहीं आ रहा है। तो सर जैसा अभी हम लोग बाई ट्रेड्स हम लोग अवॉइड नहीं कर रहे, मतलब सिस्टम की या किसी भी वजह से हमारे 2-3 बाई ट्रेड्स अवॉइड हुए, तो सर ऐसा सिनेरियो तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं फॉर टेम्पररी बेसिस, या लाइक दैट सेल ट्रेड अवॉइड करें या मिनिमल लॉस रखे, ऐसा कुछ हो सकता है सर? एक मिनट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग ने टेक्स्ट बुक वाले का एक एंट्री गौर से नहीं देखा, वो मैं दिखाता हूँ रुको। ओके, इन लोग ने जहां पे हमने वो बाय एंट्री नहीं लिया था ना, इसका बाय एंट्री है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ रुको, और मेरे को ज्यादा दिखाने का नहीं है। आई विल हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग दैट बिकॉज़ आई डोंट वांट एनीवन टू नो। जहां पे अपना जो 480 का था ना, 480 का बाय, दे टुक एंट्री एट 44,700, मतलब 500 पॉइंट ऊपर में एंट्री लिया था भाई। उन लोग ने दिन का हाई जो था उसके ऊपर में 15 मिनट का हाई, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो कैंडल है। ओके, ये कैंडल का 15 मिनट, ये दिन 30 तारीख जून को पहला कैंडल का 15 मिनट का हाई के ऊपर दे बॉट, बिकॉज दे ऑल्सो डिड बॉट हियर, दे बॉट हियर, गेटिंग द पॉइंट। तो वैसा अगर हमको सोचना है तो वी कैन डू दिस, बट मेरे लिए ये डेंजरस है क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा सिस्टम पॉइंट से 500 पॉइंट ऊपर में, मेरा तो भाई दिल नहीं चलेगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस उतना दूर हो गया। मेरा बॉटम इधर है, वो सोचो, ये इधर मेरा स्टॉप लॉस है और इधर मैं 500 पॉइंट ऊपर में एंट्री से भी 500 पॉइंट ऊपर में बाय कर रहा हूँ। सो दे डिड दैट, वो एंट्री मैंने निकाल दिया क्योंकि दैट वाज द एंट्री ऑफ जुलाई सीरीज। सर तो फिलहाल जैसा हमारा हुआ सर, हम ऐसे So yes, if someone wants to take that risk, we can support you individually, but as a group or as a मैं खुद ट्रेडर के हिसाब से तो वो ट्रेड नहीं लूंगा। सी ये आपको अभी दिखता है यार कि ये रैली मिस हो गया करके, आपको ये जब हो रहा था तभी मालूम था कि ये रैली आएगा।
नहीं सर जी, इसीलिए आई हैव जस्ट सजेस्टेड आफ्टर बैक टेस्टिंग अरे बैक कि टेस्टिंग ऐसा हम बहुत रेयर है, नहीं नहीं, ये अरे अरे सिनारियो ऐसा नहीं बहुत कह रहा हूँ रेयर सर है। जी, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। वो एकाध तो सर, एकाध छोड़ दो सर, इसीलिए सर हम रख सकते हैं ना कि चलो हम ट्रेड भी कोई मिस नहीं करेंगे। ये 500 पॉइंट तो सर अगर आप बोलते तो भी डेफिनेटली वी वुड थिंक, और आप बोलते भी नहीं और हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप बोलो 500 पॉइंट से। पर इसीलिए सर ट्रेड्स मिस ना हो, इतने विप्सोज आए हैं, सबकी साइकोलॉजी भी बिगड़ गई होगी, सब मेरे जैसे नहीं होते। बट सो एटलीस्ट ना सर फ्रॉम आर एंट्री पॉइंट 1% स्टॉप लॉस, तो हम वी कैन ट्राई के मैक्सिमम हम लोग रैली पे बैठ सके और मैक्सिमम लोग आ सके, क्योंकि सिंपल है। किसी बार लोग, हाँ कई see, लोगों ने बोला है कि दी, उन्होंने अपने आप से ट्रेड नहीं लिए। सर जी अरे आपने बोला लो। आप जो हाँ सर। बात कर रहे हो, ओके सी यू आर टॉकिंग आफ्टर सीइंग दिस रैली, व्हाट इफ दिस रैली वुड हैव नॉट कम, वही अरे मैं नो तुमको सर, आई समझा एम, रहा हूँ ना। क्या अरे वो नहीं ये कह रहा हूँ होने सर। के बाद तो हम सब इवेंट पर ढूंढ रहे कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे ले सकते थे, इसके अरे लिए सर जी, मैंने भी वही सोच के वो 1% का 0.5% किया अभी, सो दैट अरे सर अगर जी, आई एम जेन्युइन ट्राइंग टू रियलिटी से, है और मेरा मिस हो रहा है मेरे बफर से, तो लेट मी एडजस्ट द बफर, ओके। बट नॉन सिस्टम बेस्ड एंट्रीज तो यार इट इज लाइक स्विंग ट्रेड हो गया वो, फिर मैं मेरी अरे सर मर्जी जी, से टॉप बॉटम ग्रुप में डालूंगा, आई एम बाय करो या ट्राइंग सेल करो। आई एम ट्राइंग टू से कि जिस पॉइंट से हमारी एंट्री हो, जिस भी पॉइंट से आप बोलो उस पॉइंट से एंट्री हो, उस पॉइंट से मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 1% से ज्यादा ना हो। सी मैं इसमें ये कह रहा हूँ। स्टॉप लॉस किधर होता था, तुम्हारा एंट्री डे पे 1% होता था, लेकिन हाँ, फिर आफ्टर दैट, अगर मैं आफ्टर दैट सिस्टम ऑल्सो सर। स्टॉप लॉस को फॉलो करूं तो ये मेरा सिस्टम स्टॉप लॉस है। सो अभी वही आप बताओ ना, अभी मैं 1% रखूंगा तो भरोसा नहीं ना, उस दिन आएगा, नेक्स्ट डे आएगा। सो दैट इज सी इट इज देन नॉट टॉप बॉटम, देन दैट विल कम एज व्हाट यू नो, इट विल कम एज अ स्विंग ट्रेड जो मैं फिर टॉप बॉटम के ग्रुप में दूंगा। वो मैं अगर ऐसा चाहिए तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि भाई ये दिस इज द यू नो समथिंग दैट यू कैन ट्रेड, अगर जिस को लग रहा है लेफ्ट आउट। सर विकास है। हाँ विकास। हाँ सर, तो अभी आप जो ये इसी डिस्कशन पे अगर हम लोग ने अपना बफर 0.5 कर दिया गोइंग फॉरवर्ड, दैट मींस हम लोग को जो एंट्री मिलेगी सपोज बाय साइड में तो थोड़े लोअर लेवल पे एंट्री मिलेगी, तो असम्पशन यही होगा कि नेक्स्ट डे क्लोजर टू द स्टॉप लॉस बाय एग्जैक्टली, 0.5%। तो नेक्स्ट डे आपका जो नेक्स्ट बॉटम है जो आपका ये बनेगा स्टॉप लॉस वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिक। हाँ तो वो भी आपका आधा टका वो भी बचा, और माय करेक्ट। मेन फोकस वाज ये 1% के बाद बाई के बाद हमको 500 पॉइंट आ रहा था, इसके लिए हम लोग ने नहीं लिया था 2 ट्रेड में, लेकिन अगर वो अगर आधा परसेंट रहता था तो मेरे को 700 750 पॉइंट आते थे, एंड हिस्ट्री सेज वी हैव ऑलरेडी बुक्ड मेनी टाइम्स 700 पॉइंट्स आल्सो, करेक्ट। so we would have booked that. That is the reason, see there is a lot of thinking that has gone behind reducing this buffers. सर बट गोल्डन रूल क्या है आपका? आई मीन इंडिया विक्स किस लेवल पे होता है जब आप एक्चुअली सोचते हो कि हाँ यार So अभी India 0.5? VIX, if it crosses 14, then you know we might see another gap up gap down of 400 500 points coming as usual, then we might have to change it. So this is going to be a dynamic exercise till we are below 14, we are going to do this. Got it. Okay, so any other discussion, any other points anybody wants? We are already overshooted by 15 minutes. I'm sorry for that. सब लोग का dinner का time ले रहा हूँ मैं. But you know, I would see one thing I want to assure is we are going to continuously work on betterment of the system, and we have already compared with textbook and what we are doing. Yes, markets are like this and we are in losses, agreed. But that does not mean the system which is giving you consistent returns since last 7 years will go down with a failure. Okay, markets है 7 साल उसने दिया तो अभी 1 साल टोल ले रहा है। अभी मेरा खुद का भी I know and I know मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग ने ये साल काफी ज्यादा पैसा से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा अब तक का 2-2.5 करोड़ था, अभी मेरा अभी 8 8.5 करोड़ है, उसमें 30% we are down. Okay, so see, this all things is different. You don't have to think on that lines. But system is this only, and once the market are back to normal, which they will, market can't stay like this forever. And once they normalize, you will be seeing the same thing working again without any changes also. कमल सर मेरा एक ही पॉइंट था, ये जो 1% स्टॉप लॉस का जो बफर हम लोग अभी पुटअप करने वाले हैं, इसमें सर कैपिटल प्रोटेक्शन का और कुछ हो सकता है क्या?
हाँ, तो दूसरा और एक है which I am going to implement in my portfolio as well, with even which I shared with Abhijit you also yesterday. Okay, say suppose you are trading with 10 lots, yeah, more than 2 lots, yeah, you know, just understand the concept which I'm going to now tell you. Okay, so if I'm trading with 10 lots, current market I'll start with only 4 lots or 5 lots in the start. Okay, समझो अभी मेरा एक बाय ट्रेड आया 46,000 पे। ओके, तो मैं 10 लॉट से सीधा चालू नहीं करूंगा, मैं 4 लॉट या 5 लॉट लूंगा अभी। ओके, जैसे ही वो 300 350 पॉइंट इन द मनी हो गया, ओके, वहां पे मैं दूसरे 2 या 3 लॉट ऐड करूंगा, और जैसे ही वो 500 पॉइंट ऊपर चला गया, कहीं मेरा अभी या 1% के ऊपर चला गया या 500 पॉइंट के ऊपर चला गया, कि अभी मुझे मालूम है कि मेरा एंट्री लेवल इज माय स्टॉप लॉस, that is the place where I'll put all my other lots also, and then I'll hold. This will help me to reduce my average. So is that pyramiding? It's not pyramiding. This is I'm going to do for my entry level price management. Sir, Okay, तो मेरा सबका एंट्री फिर सेम नहीं रहेगा, मेरा एवरेज में एंट्री रहेगा। Okay, so that my average entry reduces my chances to lose a bigger money if I have to lose any. Sir, we will hold up till which point? 1000, 800, सर वो 1000 फिक्स ही है सर, कर 1000 देंगे। के ऊपर हम पकड़ेंगे ही नहीं सर जी। हाँ सर वो फिक्स ही है सर जी, अब 1000 के ऊपर हम पकड़ेंगे ही नहीं। नहीं, see this time we might hold longer, so again I will be putting options there that whoever are happy with 1000 should book 1000 points. Okay, and if you want to hold with me, अभी I know few things कि जब भी ये रैली है, अभी ये एक साइड का रैली है। ओके, चलो ये मिस हो गया, दूसरा रैली अपने को खाली इतना प्रेयर्स है भगवान को कि भाई वो एंट्री दे देना, ये मार्केट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एंट्री ना दे अपने को। ओके, वो एंट्री मिल गया ना, तो वी विल राइड इट फॉर द लॉन्गर टाइम। जैसे कोविड में हम लोग ने पूरा रैली लिया है, वी वुड टेक फॉर सच रैलीज ऑन आइदर साइड। सी दिस रैली वी हैड नॉट गॉट ओनली एंट्री, एंट्री नहीं था, तो इसके लिए मेरे को ये 2 एंट्री छूटा था, मेरे को कोई दुख भी नहीं है, because I know that these were not my standard entries which I would take with confidence. System अपने आप एंट्री देता है ना, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला है, चाहे फिर वो वहां से स्टॉप लॉस भी ले ले। बट अगर हम बांध छोड़ करके एंट्री ले रहे हैं ना, वो छीन के एंट्री लेने का ना, वो मेरे को नहीं जचता है। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर मिसिंग। इफ यू फील दिस रैली इज मिस्ड, ओके फाइन, क्योंकि वो मेरे को झूठ के लेने को नहीं आता, मेरे को मिल जाता है नॉर्मली, वो मेन चीज है। क्योंकि यहाँ पे हम झुकने जाएंगे और वो उल्टा पड़ागा तो बड़ा लगेगा, बिकॉज 300 पॉइंट्स ऑलरेडी आई एम बाइंग अबाउट, आई कांट अफोर्ड टू देन टेक दैट लॉस, एंड व्हेन वी आर ऑलरेडी इन लॉस। ओके, सो दैट इज द मेन की। कमल भाई, हाँ संजय अभी भाई, नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर लाइक जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, ये साल का क्या लगता है आपको? see that will depend on how the market behaves, right? So mainly my view is that entire year तो ये कभी भी इतना नेगेटिव नहीं रहेगा। नहीं, ये जो करंट बुल रन है, ये करंट बुल रन दिवाली तक चले या न्यू ईयर तक चलेगा या कब तक चलेगा? वो तो अभी not sure, but I am not looking it will go more, because normally June July are trended, and then August starts something in the different trend, and then September is reversal of June July. सर ओके, तो ये ज्यादा मतलब दिवाली तक नहीं टिकने वाला, ये ऐसा ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, सो इट विल नॉर्मली इफ यू चेक जून जुलाई एंड अगस्त इज थोड़ा बहुत रिवर्सल, एंड सितंबर स्क्वायर्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीन डन इन जून जुलाई अगस्त। ओके सर मितेश। हाँ मितेश, सर अभी जो भी नए क्लाइंट मतलब जिसने भी अभी जनवरी फेब से जिसने भी स्टार्ट किया है, वो तो ओवरऑल अभी लॉस पे ही है। तो अभी प्लस तो ये हो, दूसरा इशू ये हो चुका है कि लॉट साइज 25 से 15 हो गया। तो अभी ट्रेड्स भी मतलब टू कॉस्ट आने के लिए भी अभी ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे, जो आई थिंक सो ये साल के अंदर पॉसिबल लग रहा है सर आपको?
See, it is possible. And second thing is, that's why I asked everyone to do 2 lots of 50. क्योंकि नहीं तो फिर अभी see, we are just 2000 points away. अगर 2000 पॉइंट तुमको प्रॉफिट आ गया तो तुम्हारा 60,000 हो गया and you are out of what you are seeing as losses today. नहीं Right? सर, So लेकिन we are trading now अभी जो at least 30 quantity in each one of the clients. आई Wherever नो we सर, लेकिन जो एक प्लॉट से जिन्होंने चालू किया था वो जो अभी तो रेडी नहीं है फंड्स ऐड करने के लिए, उन लोगों का फंड्स ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो अभी एक प्लॉट से ज्यादा कर ही नहीं पा रहे उनके अकाउंट के अंदर अपन। But then उसमें तो फिर they will have to wait for a longer time. You या can't do दैट्स it व्हाट आई एम again. सेइंग। हाँ वो तो अभी क्या 25 और 15 का डिफरेंस ही आ गया ना पूरा 10 यस क्वांटिटी का ही डिफरेंस आ गया वो यस Sir, excuse me, sir. Yeah, I have a Sheila. query. Yeah, in line with this, I have a query. Like this financial year, I had increased my lot size to 4. I was doing initially 2, now it is 4. So 10 lakhs, I started with four lots. It became 11, but now it is 7.5. So should I reduce it 4 to 3 or should I do 4 only? How should it be? See, the thing is, as I told you, you can do this same thing. Okay, start with 2 lots at a time, and then whenever the market is in your direction by 300 points, 350 points, add the another 2. Sir Raj. Okay. हाँ, Raj. Initially, the Sir, last इसी time बात we were पे एक saying point for था मेरा। 25. Raj, एक मिनट। Okay, okay, sorry. हाँ, Sheila. For 25 lot size of 25, you were saying like 2.5 lakhs is one lot. We have to Yeah, so consider in 2.5 50, lakhs per. 1.45 is enough. 1.45 to 1.4 to 1.45. See, the logic is very simple. 25, when we are saying 2.5, we were considering 1,70,000 as the maximum margin we would need for one lot. And the back-to-back losses we have seen, the maximum was 75,000. So that is 3,000 points. Okay, so 3,000 points is the max loss. With 15 quantity, it is 45,000. And currently, max to max, you can see margin right now is 88,000 to 90. You catch it to 1 lakh. So 1,45,000 is the one lot required for 15 quantity. So I don't have to reduce my lot size, no? I can do it with the same. 7.5 is enough. You can easily trade 6 lots because you are doing 100 quantity. So either you can do 6, which is 90, or you can do 7, which is 105. Okay, sir. Sir, मैंने क्या करना चाहिए? Tomorrow, I think we are doing 40 lots. So same है. Tomorrow तो हम लोग अभी भी 40. So we are doing what 900 quantity. But 1,000. same thing. 1,000. 1,000 ना हाँ तो 1,000 का ही है 1,000. So I think we have reduced to what 1,000 divided by 15. हाँ तो 66 lots. So we can do one thing is we can start with 30 and then we add as and when we are adding for ourselves for others. Sir, Samarth here. Yeah, Samarth. Sir, one thing I did not understand is that a change in rule is that अगर 1% in the money होता है लगभग 400 points, then we'll shift the SL to break even, or we may even book reversal. I mean, we may book profit if you see a reversal. There are two questions here. एक तो ये कि एक तो आपने जो एंट्री प्राइस एडजस्ट करने का लॉजिक बताया कि वी में ऐड मोर जिसके पास ज्यादा लॉट्स का कैपेसिटी है, तो वो तो लॉजिक ही काउंटर हो रहा है ना सर, बिकॉज अगर उल्टा ही चला जाने का वजह से हम अगर एसएल को ब्रेक इवन पे ला रहे हैं तो उस हायर प्राइस पे एंटर करने का लॉजिक क्या बैठ रहा है? दैट इज वन क्वेश्चन. एंड सेकेंड इज व्हेन यू से रिवर्सल जैसा अगर लगा तो हम बुक कर देंगे, तो वो आई मीन ऑन व्हाट बेसिस विल वी डू दैट? आई मीन अगर वो डिस्क्रिशनरी होता है ज्यादा, सो देन इट विल बी टफ फॉर एवरीबॉडी. See, same. One thing is if you see any resistance, divergence, so yes, you will then need. So I know your point from where you are coming, Samarth. So you are, just thinking from just top bottom point of view. And if you are just want to do it yourself, yes, then you'll have to have the knowledge of RSI and candlesticks together. Okay, to take these independent decisions also. Okay, because see, one thing which we are seeing, this is this year only. Okay, but will this continue next year? We don't know. How long will this continue, this type of market? We don't know.
That's why we now need to adapt to these changes. Okay, see, 6 months I was also reluctant because 7 years of goodwill was there with us. Okay, suddenly there is a change. So now that change, we saw it for 6 months. Now, if I don't change, or I don't adapt to this changed environment, it might not be good for my capital as well. And that Sir, is the reason why we are adapting these changes. I'm on the same page with you for the change, but fine. I got my answer for the reversal part. But what about the first question, sir? That why will we add that 1% in the money when 1% in No, the so we money? are not adding 1%, right? We are only adding 0.5%. And that is No, only when sir. my entry and my closing price are too close. So that, see, if you follow textbook, right? Say So, suppose. sir, my question is different, sir. My question is not with respect to buffer. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने एग्जांपल लिया ना कि somebody is trading 10 lots, right? So you told that start with 2, 3 or 4. You are talking about the new system. So what I am saying is, rather than taking the initial start with the higher lots with your actual lot size, okay? If the market say reverses the next day from that position itself, okay, so then your SL is hit on half quantity and not on your entire quantity. Okay, so that is the main reason. But if it is growing in your direction, you should not lose on the profit also on the entire quantity, because by the time you travel half road, you are now with the full quantity. तो सर इसी बात पे मेरा एक पॉइंट था. हाँ, तो एक मिनट में खाली उसका खाली एग्जांपल दे देता हूँ. So suppose if you are booking 1,000 points in that trade, okay, effectively on your entire quantity you are booking 700 or 750 points. Okay. So instead of losing say 1,000 quantity पे 1%, उसे जो आप 500 quantity पे 1% lose कर रहे हो, और अगर आपको 1,000 पे profit आ रहा है तो आपको 1 पूरा नहीं आ रहा है, 1,000 points नहीं आ रहा है, 750 का रहा है, which is okay because you are also saving when the stop loss is hit. Okay, understood. Okay, हाँ राज बोलो. सर जैसे ये टॉप बॉटम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है अपनी. हाँ, ठीक है, जब भी एंट्री आ रही है मींस इट्स इन अ ट्रेंड. या ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. अभी जो आपने मल्टीपल लॉट की जो बात की कि हम समझो 2 लॉट पे कर रहे हैं, तो एक लॉट अभी लेंगे, एक लॉट 350 पॉइंट के बाद लेंगे. एग्जांपल जो आपने दिया अभी. सर इसको इस तरह से नहीं कर सकते बिकॉज एंट्री तो हमारी ट्रेंड पे आ रही है, बिकॉज इट्स इन अ ट्रेंड. हम 2 लॉट, अगर से मल्टीपल लॉट में 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 भी हो सकता है. अगर हम 2 लॉट अभी ले रहे हैं और 500 पॉइंट्स तो हम एक लॉट को निकाल दें, और बचा हुआ एक लॉट जो है 50% जो है, उसको हम स्टॉप लॉस बाय प्राइस पे ले आए. कर सकते हो, बट उसमें यू आर अज्यूमिंग दैट इट विल गो इन योर डायरेक्शन ओनली. हाँ जी बिल्कुल ना. व्हाट इफ इट डज नॉट गो इन योर डायरेक्शन? तो सीधा तुम्हारा जो लॉस है वो एक्चुअल क्वांटिटी पे जा रहा है. सो सी करंट सिनेरियो राज, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड लॉस ऑफ कैपिटल. गेटिंग माय पॉइंट? करंट सिनेरियो है इसके लिए. नॉर्मल रहता था, अगर ये लास्ट ईयर की तरह ये क्वार्टर रहते थे तो मैं ये सोचता भी नहीं था. One question there is, what if suppose we add lot 300 plus points and the market reverses, so the SL for those additional lots what will it will be same as what your other lots are at. So we are not going to change in that. Okay, so SL will be more for those lots there. हाँ, so लेकिन आपका एवरेज 150 पॉइंट्स से कम हो जाएगा ना. ओके सर सुशील. हाँ सुशील सर मैं ये बोल रहा था कि सपोज हमारा एंट्री टॉप है 45,000, राइट? और आज समझो 44,900 पे बंद हुआ मार्केट, तो हमारा 45,000 प्लस 0.5%, मतलब 45,000 45,250 समझ लो ना. हाँ, 225. और हमारा अभी कल समझो हमारी एंट्री है और वो 45,230 पे ही बंद हो गया और एंट्री नहीं मिली, तो उसके नेक्स्ट डे सर क्या वही रहेगा? नेक्स्ट डे नहीं ले सकते, तो फिर वो एंट्री छूट जाएगा. बट ऐसे बहुत कम एंट्रीज रहेंगी जो छूटेगी. ओके सी बफर ने हमको अभी तक बहुत बचाया भी है. कभी कभी एक आध टोल दे देगा, नहीं दिया एंट्री, ठीक है.
ओके, मतलब 10-20 पॉइंट से अगर एंट्री रहेगी तो नेक्स्ट डे नहीं होगा वो, नहीं होगा वो, क्योंकि फिर वो टॉप एक्चुअली क्रॉस हो चुका है, तो फिर आप आधा टका किस पे लगाओगे? और नेक्स्ट डे समझो 150-200 पॉइंट का गैप अभी मार दिया, तो तुम एंट्री कहाँ लोगे? तुम्हारा एक्चुअल एंट्री 45,000 है, तुम लोगे फिर 45,300, 45,350 पे। Hi sir, this is Nilesh sir. या नीलेश? So my question is कि let's say आपने कहा कि if you taken the entry part wise, for example 40,000 पे if you have a running with a multiple lots, so 10 lot made 5 lot first and then after 200 points another lot. So can we do same in exit strategy also? Let's say we get entry 10 lot at 40,000 and then when we do exit, so 400 point पे maybe 5 lot exit किया and then remaining 5 lot we may hold it for quite some time and then exit किए तो मार्जिन देना पड़ेगा ना। हाँ वही ना। ओके, वो तो अगेन इट विल डिफर, M2M भरना पड़ेगा उतना। ओके, तो एंट्री पे ही वो करना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग स्ट्रेटजी पे। अच्छा, नहीं, सी सो व्हाट हैपेंस इज, या तो तुमको मार्जिन अवेलेबल रखना पड़ेगा उसके लिए, या तो ऑलरेडी I don't know, are you pledging your shares, नीलेश? क्या कर रहे हो आप? No, it's not. I'm not pledging the shares, but अगर suppose सारे लॉट्स मतलब मार्जिन इज अवेलेबल, कंसीडर दैट। Then you can, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। I think गौतम ने ये पूछा कि 1343 MA crossover we can use, but see, I don't think so. You know, we can change the strategy in mid of the year कि हम top bottom नहीं follow ना करके we do dual MA. Okay, so I don't know dual MA. I think you used to do that as part of the top bottom class, though. Yeah, sir. So we used to tease that, but we closed that because 43 that even we are not using for my trading as well. So what we are not using, we stop training as well. Okay. Okay, so training से भी निकाल दिया हम लोग ने 13 and 43. We are using it for intraday 15 मिनट का time frame पे. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. And I think Pooja asked for hedging, but see, hedging I think will reduce your margin of profit also. Okay. And yeah, current market, you can think of doing that also. But understand one thing, once the market normalizes, जो भी हम implement करेंगे ना अपने यहाँ उल्टा पड़ेगा. Right now, because of this market, see, I am not talking only about our market. Okay, मैं अभी 2 दिन पहले और एक चीज खाली देख रहा था. I'll show you that also. Okay, I'm just showing you this because I know if you recollect, नीलेश करके एक बंदा है जो Dow और Nasdaq ट्रेड करता है, अपना टेलीग्राम ग्रुप में है, he had put his remarks also. Okay, तो मैं खाली उसी के remarks पे I was looking into this. Okay, and if I check this monthly on Dow, okay, ये कुछ नहीं टेक्निकल चार्ट चाहिए। 34,700 का लेवल वाज अ ब्रेकआउट पॉइंट। अरे नहीं, मैं एक चीज दिखाता हूँ रुको। मैं खुद ये देख के टेंशन में आ गया था कि इन लोग ने 8 महीने किया क्या रहेगा डाउ वालों ने, अगर टॉप बॉटम डाउ पे ये चीज किया रहेगा। सी दिस मंथली मतलब ये डाउ में मर गए लोग। सी 1 कैंडल 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स ऑफ साइडवेज मार्केट इन डाउ and now it is trying to give a breakout above this, and वो भी एक रेजिस्टेंस पे अभी रुका है, अभी इधर से कहाँ जाएगा मालूम नहीं है। ओके, दिस इज द ऑल टाइम हाई इट हैज हिट प्री कोविड। ओके, तो एक बार यहाँ तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। ओके, बट दिस इज व्हाट इवन Dow has been doing for last 8 months. तो worldwide it is the same thing. Top bottom is not perform because see top bottom ऐसे में परफॉर्म होता है। See this movements, और ऐसा वाला मूवमेंट हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि ये होएगा। सी एनी टाइम, ये देखो आप कौन सा भी मिसाल देख लो, यू हैव नेवर सीन कंसोलिडेशन फॉर मोर देन दिस मेनी मंथ्स। दिस इज व्हाट इज मार्केट डन, एंड इट इज नॉट ओनली इंडिया, इट इज ग्लोबल। आप FTSE देख लो, जो भी देखो, मैं तो ये सब देख देख के परेशान हो गया था अभी बीच में। इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर सेइंग
top bottom. See, once the market gets out of this phase, again top bottom as usual will work. Okay, उतना तो मैं श्योर नहीं है, साथ साथ हम लोग ने सब देख लिया. Getting it? So any person, any other queries, anything, they are already overshooted by 35 minutes. 9 बजे तक का 9:35 है. Whatever anyone still has got any doubts or any clarification. सर 2400 पुट्स का बफर बचा है सर, कुछ लोड साइज डिक्रीज कर रहे हैं कि सेम ही रहना है अभी? दो लोग तो डाउन कर दिया मेरा सर. एक ही मानना है, मैंने जो भी बोला मैं वो इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. आधा क्वांटिटी करूंगा, फिर आई लेड आधा. ओके, ताकि मैं ट्रेड से बाहर ना होगा. So that I am going to implement for myself. Same, I recommend, if everyone wants to do it till market normalizes. जैसे आपको दिखेगा कि भाई अभी अपने सीरीज ऑफ ट्रेड्स आ रहे हैं, तभी आप फिर वापस फुल ऑन चालू कर दो. तो सर आप ऐसे ही गाइड करेंगे राइट? अभी आप बताएंगे सेकंड ट्रेड कब लेना है, सेकंड हाफ कब खरीदना है, आप हमको वैसे गाइड करेंगे राइट? अभी See, you can ask me personally, I will surely do that. But in group, because group में बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 lots वाले ही हैं. So if you are doing multiple lots, ping me separately के are we adding now? तो मैं ऐड करता रहूंगा, मैं तुरंत बोल दूंगा I am adding. आप सिर्फ अपना बता देंगे कि आई एम एडिंग सेकंड हाफ, तो everyone to ping me and ask me whether I am सर adding. वो आपके लिए भी ज्यादा हो other जाएगा. lots also. सब लोग आपको पिंग करेंगे, उससे सर पहले एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा लेंगे है. आप सिर्फ, आप जब सेकंड टाइम लेंगे, इफ यू कैन पुट अ मैसेज कि मैं सेकंड लॉट ले रहा हूं, तो समझ जाएंगे. अरे वो बाकी लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी एकदम ही नए ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रेड डालने को भी नहीं समझते. तो ये सब मैं डालूंगा, उनको कुछ उल्टा आप कर एक देंगे. जिनका मल्टीपल लॉट बना दो. Okay, so one thing is if you want to add, मेरे को खाली पूछ लो एक बार कि आप ऐड कर रहे हो क्या? I will see, my response to everyone is immediate. वो टेंशन मत लो, आप कुछ मिस नहीं करोगे. सर वो हम लोग पूरे टाइम रहते नहीं है ना इस पे, इसलिए कभी कभी ध्यान अरे से वो निकल. चलेगा. See, I don't mind, but मैं डालूंगा और लोगों को कंफ्यूजन हुआ ना, तो वो संभलते मेरा पूरा दिन निकल जाएगा. आप सिर्फ एक अगर कोड बना दोगे कि मल्टीपल लॉट्स पीपल कैन नाउ बाय एडिशनल सेकंड हाफ, ऐसे कुछ करेंगे तो भी क्लैरिटी आ जाएगा. और जो सिंगल लॉट वाले वो समझ जाएंगे कि दिस इज नॉट रेलेवेंट टू देम. और जो वन लॉट वाले, I will try, but if there is confusion creating, then we will stop. Then you ask me personally. okay. Yeah, I know, there are multiple people who are trading it now. That is the only reason why I am a little bit, reluctant to put it on the group, because आज भी मेरे को ट्रेड डालने के बाद दिखाया जाता है कि भाई ये ट्रेड बराबर डाला है कि हम लोग ने. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास, तो उन लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा भाई करना क्या है, and they might do something else only in their trade. That is the reason why I am saying that. But let's see if we want to do it that way also. We can do it for 1 or 2 times. If I'm not facing any confusion, we'll continue that way also. हेलो सर, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ. हाँ वीरेंद्र जी बोलिए. आप एक 10 लॉट एंड अबव का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं ना सर? अरे नहीं बाबा, कितने ग्रुप है फिर? वो जब भी टाइमली मैसेज रहेगा ये 411 वाला, वो फिर बहुत इश्यू हो जाएगा. ओके ओके, थैंक यू. नहीं वो कॉमन ग्रुप ही रखो. जस्ट अ पार्ट ऑफ जो. हेलो हाँ नितिन. सर एक्चुअली फिर से रूल बताओ ना सर, एक्चुअली क्या करने का मतलब ज्यादा लॉट रहेगा तो मतलब. अरे सी, रूल खाली कितना है कि 2 रूल्स जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है कि अगर 1% इन द मनी रहेगा हमारा, तो वी माइट आइदर क्लोज द ट्रेड और वी माइट चेंज टू एंट्री लेवल स्टॉप लॉस. ओके, और अभी जो दूसरा रूल है वो है कि बफर भी जो हम लोग 1% मैक्सिमम रखते हैं ना, उसको मैक्सिमम भी 0.5% पे चेंज करेंगे. ठीक है, तो ये 2 रूल्स है. तीसरा रूल जो मैंने बात किया वो है अगर मल्टीपल लॉट्स है तो आप आधा एंट्री लेवल पे रखो और बाकी आप इवेंचुअली ऐड करो. मतलब समझो अभी आपने 45,000 पे ले लिया एंट्री, 45,350 क्रॉस करेगा तो आप थोड़ा और ऐड करो. समझो आपका 10 लॉट है, 5 आपने पहले ले लिया है, तो आप दूसरा 2 या 3 लॉट 350 पॉइंट के ऊपर डालो, और जैसे ही 45,500 के ऊपर जाता है तभी आप आपका बाकी का लॉट्स ऐड करो.
ओके ओके सर हेलो बट इस सब कंफ्यूजन वाला काम हो गया अभी। सर 45 because market is like पे this. दूसरा 2 या 3 जो आपने बोला, हेलो हाँ हर्षित 45 350 पे आपने 2 या 3 बोला, और थर्ड एडिशन कहाँ पे करने का? 43,500 के ऊपर। सर हमारा 45,500 के ऊपर बैलेंस। हाँ, जहाँ पे हम 1% पे चले जाएंगे स्टॉप लॉस पे, ओके, मतलब हमारा फिर एंट्री लेवल स्टॉप लॉस है, वहां पे चाहिए तो ज्यादा लॉट ऐड कर दो सब। Getting the point? सर फिर 1000 पॉइंट्स अभी हमारा टारगेट ही रह रहा है ना, उसको हम लोग कम नहीं कर रहे, राइट? 800 to 1000 is going to be the area, okay? Okay. And mainly we will see charts at that time. If there is no resistance or no support around that, and we see that it is still going to go in that direction, we might hold, because this time the rallies would be bigger, is what my things are saying. But if the choppiness reduces, we can hold on. एक्चुअली हम लोग जो चेंज कर रहे हैं रूल में, वो हम लॉट आधा आधा करने से हमारा प्रॉफिट भी आधा हो रहा है। इन ऑर्डर टू नहीं, प्रॉफिट आधा नहीं होगा, प्रॉफिट 75% मिलेगा, हाफ नहीं मिलेगा। 75% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। दैट इज द कैच। बट देन योर लॉस इज हाफ, सो लॉस विल नॉट बी 100, इट विल बी 50, बट प्रॉफिट विल बी 75 एंड नॉट 100। जो एडिशन हम करेंगे ना सर फर्दर लॉट्स की, हाँ, इन सब का एसएल कहाँ पे रहेगा फिर? वो सब साथ में ही रहेगा, एसएल सबका साथ में ही रहेगा, कहीं पे भी ऐड करो। सो द ओनली थिंग इज फाइनल एडिशन के बाद तो तुमको मालूम है कि आपका बाई प्राइस या लेवल क्या है। अगर लॉस भी आया तो आपको खाली जो नए ऐड किए हुए लॉस लॉट से उस पे आएगा, बाकी किसी पे नहीं आएगा। बट जो पुराना वाला है वो एंट्री प्राइस पे आ जाएगा फर्स्ट एडिशन हाँ, वाला। पुराना वाला जो फर्स्ट 5 कॉल लॉट है वो तो आपका एंट्री प्राइस पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला या 350 वाला भी? हाँ, 350 वाला और 500 वाला में यू माइट हैव सम लॉसेस, बट देन अगर ऊपर गया और हम लोग ने बंदी कर दिया तो भी यू आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी। ओके, ठीक है। Okay. Okay. So let's see. Hope we get a good quarter now. Okay, and let's see how top bottom evolves with this new rules. Okay. So I know एक बार WhatsApp we पे are डाल दो making it, there will be some dynamic changes that we'll be doing during the market hours. So yes, it will be little difficult for those people who are at job and are not able to see the messages on time. Okay, so because of this market and the change in the market, there would be some communication which we might have to send. So please थोड़ा ये ग्रुप का अलर्ट या तो कुछ रिंगटोन अलग से रखो, because if the markets are not behaving as we are expecting, we might put messages on the group to get out of the position or do something with the position. सर लास्ट एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, आपने जैसे 45411 का क्वेरी क्लियर बोला था ना, दिस इज माय एग्जिट, हाँ, वो जरूर दे दिया कर। हाँ, अगर वो मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि हाँ मैं अरे उस दिन सर मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे थे। मैं बोला ना 200 से मैं तो सोच रहा था निकल जाओ सर, इन मैं नो डालू, मैं टाइप करूं ऑप्शंस और मैं पेस्ट करूं ना, तब तक तो ऑलरेडी 300 चला गया। फिर मैं बोला भाई अभी निकल ही लो सब लोग। नहीं, आप जहां एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, आई एम रेडी ऑलवेज। सी इट विल बी यूनिवर्सल, क्योंकि इवन मेरा ट्रेडर टेंशन में आ गया। उसने उस दिन मेरे को पूछा रहा सर करना क्या है। ओके, तो दिस इज माय ट्रेडर। ओके, वो मेरे को पूछ रहा है सर करना क्या है। देखो मंडे को आई सर क्या करना है बताना, इसलिए तुरंत उसको कॉल किया। यस सर, ठीक है। ओके, सो ही आल्सो गॉट कंफ्यूज, तो तुरंत मैंने उसको बोला भाई तुम निकल ले, बाद में देखेंगे करके। My entry and final exit, first entry and last exit should match with you. That's all. Yes, that we will do it. Don't worry. That's all, sir. Thank you. Yeah. Okay. सर एक बार ये WhatsApp पे डाल दो ना रूल्स मल्टीपल और हाँ, वो मैं डालूंगा, yes. Thank you, sir. Thank you very much.
So thank you everyone. And Thank you, Kamal ji. Thank you, and good night, sir. Bye. Thank Good you, night. sir. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, everyone.